ग्रेटफुल कि मैं आपको आंसर अगर कर पाऊँ सही से अगर, ठीक है? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आप लोगों को अगर ट्यूवी नॉट के बारे में नहीं पता है, ट्यूवी नॉट इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जर्मनी, हैनोवर जर्मनी। सो आप लोग के सारे जितने भी लाइक पार्ट्स ऑफ लाइफ है, आपके सारी जगह पे ट्यूवी नॉट इज प्रेजेंट because they provide so many technical services all over the globe that right now मेरे को भी नहीं पता है कि कितनी सारी हैं. One of the example which I can give you is your laptop. आपके लैपटॉप से जो ब्लू रेज निकलती है, so these blue ray blocking and everything, these technologies are being certified by TUV Rhineland. And like this in India we have almost 30 to 40% जो renewable energy, conventional energy का जो segment है, उधर TUV India is present, and TUV India is like managing all the inspection and testing part of that particular segment, that particular division. Right now मैं इनके aerospace and autonomous vehicles division के साथ काम करता हूँ. I'm working with Alter Technologies, one of their subordinate companies, and this company is situated in Seville, Spain. Okay. So आज हम लोग जितनी सारी बातें करेंगे, that will technology तो like आएगी ही. It's a like long conversation. Technology आएगी, but first of all, if you can just like go to the next slide. I have to show you something. Okay, so this is हम लोग का starting point. Myths about this industry, about every industry, कि सब लोग मेरे को एक ही चीज बोल रहे हैं from my first year onwards कि recession is coming. I hope आप लोगों ने भी ये सारी चीजें सुनी होंगी from your seniors or from the people you have heard जो लोग काम कर रहे हैं in the industry, that recession is coming. Recession has come. हम लोग को जॉब नहीं मिलेगी, जॉब इज लाइक डिक्लाइनिंग, जॉब मार्केट हो रहा है, वो गिर रहा है एंड ऑल. Actually, from what I have seen and what my I've got friends in industry, so I know this fact that recession is coming. This is a complete bullshit, utter bullshit, because sometimes क्या होता है ना, हम लोग को ये चीजें बताई जाती है because from where we are hearing these things, उन लोगों का generation that's gone. Okay, so right now what is happening is the market is not shrinking. The only thing which is like going forward is जो हमारे recruiters हैं, they are just getting pickier. वो इतना picky हो चुके हैं that they are only wanting people who can add something to their company, to their organization. It's not like कि आप लोगों को job नहीं मिल रही because you are less qualified or something. It's because जो आपका role है उस company में, that is not getting decided by the recruiter, and that's all recession is. Because with every like hit of recession, new jobs comes. That's the fact, and a survival of the fittest chalta hai. Okay, so abhi ke liye like the AI revolution is coming. AI ek pehle jaise in 2010s 2000s आपके पास .com बबल था, इतना कुछ था. उस टाइम पे एकदम से रिसेशन हिट किया, .com बबल फटा, रिसेशन आया, सबको लगा कि यार ये चीज तो है, ये चीज तो पहला सेगमेंट था, ये चीज को अभी चलनी चाहिए थी, बट इट्स नॉट गोइंग, और पीपल ने उसको बोल दिया कि वो चीज रिसेशन में. बट दैट्स नॉट एक्चुअली हाउ रिसेशन वर्क्स. रिसेशन काम करता है कि या some of the fields they die because they have grown so much, क्योंकि उन लोगों को एक पॉइंट के बाद उनको खत्म होना था, और दूसरे जो उनके सक्सेसर्स है दे हैव टू कम, है ना. राइट नाउ एआई इज लाइक बूमिंग. एवरीबॉडी इज नोइंग कि एआई जो है that is going to like take over the world and all. But like quite frankly, I'm working into the industry. I know it's going to take like years to actually the actually जो चीज होने वाली है वो चीज होगी, because it's going to take years, है ना. And what is happening is जो recruiters हैं they are getting more pickier, because every time जब वो लोग उनके पास जो आपके पास जो कैसे जो resumes आते हैं, those resumes they don't go to a person, they are passed through an ATS, है ना. And ATS में if you are writing like things which actually don't that are not relevant, तो आपका जो पर्टिकुलर CV है, resume है, उसको छटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. Alright, and that's why people बोलते हैं कि भाई
या जॉब नहीं लग रही है बिकॉज या सीवी राउंड ही पार नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स नहीं होगा, बिकॉज अभी आप लोगों के लिए जो मार्केट है दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन में टुडे देयर इज लाइक ह्यूज स्कोप। हर टाइप के इनोवेशन में वी नीड पीपल, वी नीड लाइक टैलेंट्स जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, है ना। एंड दैट इज वेयर एक्चुअली द इंडस्ट्री इज हेडिंग टुवर्ड्स इनोवेशन, नॉट टुवर्ड्स कि जहाँ पे ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं एंड ऑलरेडी लाइक चीजें वेल डिफाइंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है ना। दे डोंट नो, दे डोंट वांट पीपल ओवर देयर, दे वांट पीपल ओवर इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन साइड पे इफ यू आर गोइंग, इफ यू आर लाइक लाइक इफ यू आर गोइंग विद अ माइंड कि हाँ आई हैव टू मेक समथिंग, आई हैव टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, I have to do something which can add some, you know, uh, something to the organization. Of course, the organization is open to hear like every single idea of yours. So that is where actually this particular jo myth hai, this has to go, because recession it will come and it will go. Right now, अगर अभी भी आप पूछोगे लोगों से recession is going on, है ना, बट क्या लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही? या दे गेटिंग, एंड दे गेटिंग मच लाइक हायर पैकेजेस देन मी। मेरे कॉलेज में लाइक वी हैव गॉट पीपल हु गॉट 60-70 लाख रुपीस पर एनम जॉब्स, है ना। एंड that's not because IITs are doing something different. That's just because the people who are in IIT and people in general also. I'm not telling about IITs. I'm telling about like people in general. जो ideas लेके आते हैं organization में, उनको obviously कुछ ना कुछ मिलता है in return from the organization, and that's the reality. Okay. So do you have any question over on this slide, on this particular slide? अगर है, you can ask freely. I'm ready to answer if you want. Yeah, Nidhi, tell me. Sir, I wanted to ask that how should our resume be designed so that we can clear the round? Okay, a very good question. Resumes actually, there's no particular format, but yeah, there are some keywords, key points that you should have in your resume or CV that can make the recruiter stop at your resume, because resume come, resume goes, किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। So like if you're having a work experience right now, second years they don't, I don't know if they have any work experience, but third years they should have a work experience at any organization. That's what I think, because right now आपका projects, if they are relevant, okay, we'll go to the projects later. Work experience, अगर आपके पास work experience है, like you have got work experiences at organizations, at corporates जहाँ पे आप लोगों ने कोई relevant काम किया है, now focus on this word relevance, because this will be very important in the later parts of our like talk, later parts of our interaction. Right now आपके work experience पे you've got like projects, you've got corporations जहाँ पे आप लोगों ने काम किया है, but the work is not relevant enough. तो आपका जो resume होगा that will not go like par the, आपको समझ आ रहा है, आपको जो resume है वो आपके recruiter के पार नहीं जा पाएगा। ठीक है, so if you are doing work in, if I'm saying like web dev, if you can relate web dev, if you're just doing front end, if you're just making websites, they've got people who can make better websites, 100% more good better websites than you. आप लोगों का सीवी किसी काम का नहीं होगा, वो पर्टिकुलर वर्क एक्सपीरियंस आपके किसी काम का नहीं होगा. So you need to have those particular work experience which can actually add something to the organization, and that actually depends on कि आप जब उस जगह पे काम करेंगे you will automatically feel कि हाँ मैं जो काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो actually relevant है. So do relevant work. Don't do just for the sake of internship. Don't go over any other, don't go to any internship that will like give you a work experience on your CV. That will not work. Just go do an internship जहाँ पे आपका actually में जो काम है वो एक्चुअली रेलेवेंट है. ओनली देन एंड देन आपका जो रेज्यूमे होगा दैट विल एक्चुअली लुक समथिंग लाइक अ रेज्यूमे. क्योंकि मैंने बहुत सारे रेज्यूमेज देखे हमारे भी यहाँ पे,
हम लोग ऐसे ड्राइव्स करते रहते हैं जहाँ पे हम लोग लाइक वर्कशॉप्स करवाते हैं एंड वीव गॉट स्टूडेंट्स हु शेयर आवर रेज्यूमे. मैंने 2-3 रेज्यूमेस पढ़े थे मेरे ईमेल पे आए थे एंड आई वाज एक्चुअली शॉक कि लोग जैसे इंटर्नशाला एंड लाइक और भी जैसे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं. those internships actually they don't give you something. They're just like they are just paper weight की तरह आपके करियर के ऊपर because they are not like something जो attract कर सके. If you cannot attract a senior at your college, how can you think कि भाई तुम्हारा जो recruiter होगा वो उससे attract होगा, है ना? So you have to work on skills. First of all, you have to work on skills, add those skills to your resume, have a work experience at an organization. Now, this work experience, I'm talking about third years. For second years, you need to have projects. Okay, good, relevant projects. I'm in AIML, so I can give you some tips. Like हम जब start करते हैं with AIML, हम लोग को basically बताया जाता है कि we have to start from what can I say, classification problem, prediction problems. लोग इतने सिंपल प्रॉब्लम्स उठा के लाते हैं लाइक कैट एंड डॉग क्लासिफिकेशन. व्हाट डू यू थिंक कैट एंड डॉग क्लासिफिकेशन के पहले हुआ नहीं था क्या? ओके, यू कैन लर्न फ्रॉम दैट बट डोंट ऐड दोज स्किल्स, डोंट ऐड दोज प्रोजेक्ट्स टू योर सीवी, है ना? पब्लिक फोरम पे आप कभी भी अपने बैड इमेज तो नहीं डालोगे ना. एंड रेज्यूमे फॉर यू इज योर पब्लिक फोरम, वो सबको दिखेगा. And if you're adding a cat dog classification in your CV, then I don't think so that will work anywhere in your advantage. Okay, so have projects that are relevant. ठीक है, अच्छे projects use करो. अगर let's say you are collaborating with someone or you're contributing in someone's project, add those projects. ठीक है. You've got plenty of projects in GitHub जहाँ पे आप contribute कर सकते हो. You've got friends जिनके साथ आप ग्रुप में बन के projects बना सकते हो. ऐसे projects बनाओ जिसमें आपकी टीम स्पिरिट, है ना, आपके सॉफ्ट स्किल्स एंड आपके टेक्निकल स्किल्स दोनों सामने आए. ओके, डोंट जस्ट ऐड प्रोजेक्ट्स और वर्क एक्सपीरियंस जस्ट फॉर नेम से कि मेरे को भाई कंपनीज देनी है, इसमें 3 एक्सपीरियंस डालने हैं तो 3 एक्सपीरियंस डाल देता हूँ, मजा आ जाएगा. दैट विल नॉट वर्क. Yeah, it can work in some places, but right now market recession चल रहा है, so I don't think so it will work. Right. So निधि, अगर आपको क्लियर हुआ है so आप बोल सकती हैं. अगर आपको क्वेश्चन आपका किसी और का कोई क्वेश्चन है about this CV और रिसेशन और कैसे आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन है किसी का, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. आज के डिस्कशन के वो देखेंगे, क्या बोलते हैं, पूरे कंटेंट्स देखेंगे. Okay, I think Shase next slide दिखा दीजिए. Alright, so अब हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं. So discussion will be divided into 3 parts. College struggles. Yeah, I am in college, so I know the struggles. Indian market, which I think it needs to get addressed because अभी के लिए Indian market it's like people know but they don't know, है ना, ऐसा सीन हो चुका है. And the last and the final, international offers कैसे आप grab कर सकते हो, opportunities like remote internships and all आप कैसे grab कर सकते हो. So let's just start from the first. College struggles. So, second years, do you have like what kind of struggles do you think college में आपको मिला है? Like from first year तो आप लोगों को लगता था कि भाई पहले CSC में या फिर AIML में जिसमें भी घुसेंगे कुछ करेंगे, but coming to second year आप लोगों को कैसा लगता है? Like कुछ आपको feel होता है? If anybody can like share the experience in second year, if anybody. कौन second years तो है I guess शायद से. Yeah. Okay. Okay, so let me just tell my story, second year. So what happened in second year was I was completely like, I was not from a computer background.
है ना. So मेरे को उतना कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके बारे में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था. सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि मैं कॉलेज की पढ़ाई किए जा रहा था. Like college curriculum was like my forte. I was getting good marks. I was getting like uh, a decent CGPA था मेरा, and अभी भी है, and I was doing good. But second year में what I was also experiencing was that कि third year में जो students थे, they are actually struggling very much with their placements. Okay. Second year में I saw that, but I never thought कि हाँ it will actually affect me because मेरे भी दिमाग में वही चीजें थी कि right now recession is going on. Okay, so second year, third semester में I was like completely onto my uh, studies, college curriculum. Third year में I started with my DSA and all. थर्ड सेमेस्टर के एंड में हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में हम लोग को डीएसए पढ़ाना शुरू किया. एंड डीएसए एक्चुअली वाज what can you say? DSA is like a thing जिसको बहुत ज्यादा exaggerate किया जाता है. I know कुछ लोगों को like this can hurt, but DSA को बहुत ज्यादा exaggerate करा जाता है in terms of like placements. I know it's very important for your placement drives and this thing, your growth, career growth. I know because it can impart some of the skills in you, like problem solving and logic building. I know that. But you have to see one thing also कि आप लोगों का DSA जो है, that will only be used for getting into the company. ठीक है. जैसे आपका डीएसए आप लोगों को प्रिपेयर इस तरीके से करना होता है कि आप लोगों को हेल्प करे वो टू गेट इनटू द कंपनी, नॉट कि आप लोगों को हेल्प करे वो उसके बाद डीएसए धीरे धीरे करके आपके करियर से जाता रहेगा एंड यू हैव टू फाइंड अ डोमेन. ओके. सो डीएसए आप लोगों को उतना ही करना चाहिए जितना यू थिंक इज गुड इनफ टू गेट इनटू योर ड्रीम कंपनी. अगर इफ यू आर like head over heels fallen for this particular skill DSA, after you आपकी कंपनी में like if you are getting into that company, है ना, और आपकी कंपनी में हो गया, वो जो स्किल होगा वो आपको हेल्प करेगा टू सर्टेन एक्सटेंट्स ओनली. और उसके बाद जब आपकी टीम में आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन, यू हैव टू वर्क ऑन फ्रंट एंड, यू हैव टू वर्क ऑन बैक एंड, यू हैव टू वर्क ऑन मशीन्स, यू हैव टू वर्क ऑन मॉडल्स, आप लोग बिल्कुल वो हो जाओगे, लाइक नम हो जाओगे बिकॉज यू हैवंट डन दोज थिंग्स. ठीक है. सो आपको डीएसए के साथ साथ अपने सेकेंड ईयर में आपको एक डोमेन चूज करना पड़ेगा टू वर्क अपॉन. ठीक है. either it can be AIML, it can be cyber security, it can be like web dev or any other system designing. It's up to you. You have to work on that particular domain. ठीक है. उस डोमेन के बारे में आप लोग को अगर सीखना है, यू हैव टू वर्क फ्रॉम द बेसिक्स सीखो. सेकेंड ईयर इज इनफ टू लर्न अबाउट द बेसिक्स. ठीक है. एक बार सेकेंड ईयर खत्म हो गया उसके बाद अगर आपने बेसिक्स पकड़ना शुरू किया, देन आई थिंक फ्रॉम कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि जब आप कंपनी में घुसोगे यू विल बी लाइक ऑफ एनी यूज. ठीक है. सो सेकेंड ईयर इज अ पॉइंट. इवन इफ यू आर डूइंग अब कुछ थर्ड ईयर्स अगर यहाँ पर अभी भी अपना डोमेन चूज नहीं कर पाए हैं, जस्ट फाइंड इट एनीवेयर. है ना. आपका डोमेन आपको एक्चुअली में आपकी पहचान बनेगा एट द एंड ऑफ योर फोर्थ ईयर. बिकॉज अगर आप अभी से नहीं ढूंढ रहे हो, चीज़ें बहुत फास्ट चल रही है, अगर आप अभी से नहीं ढूंढना शुरू करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द प्लेसमेंट्स. बिकॉज आप कभी भी किसी कंपनी में बैठोगे, यू विल बी सिटिंग फॉर अ पर्टिकुलर पोजिशन जो एक पर्टिकुलर डोमेन का है. इफ यू आर नॉट डिसाइडिंग योर डोमेन तो आपको दिक्कत हो जाएगी कि मैं इंटरव्यू में क्या बोलूँगा. इंटरव्यू में या you will be asked about DSA, you will be asked about algorithms. I know time complexities भी आपसे पूछे जाएंगे, alternative approaches भी पूछे जाएंगे आपसे. I know that part also. But जब वो part खत्म हो जाएगा, they'll actually start with the domain specific questions. Like जिस particular position के लिए वो आई है. If they're coming for software developers, है ना, वो आपसे अपनी लैंग्वेजेस पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे आपने कितने फ्रेमवर्क्स पे काम किया है, उससे पूछेंगे कि आप किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, आपने क्या क्या बनाया है.
ठीक है. So if you're not finding your domain, or if you're just looking for कि मेरे को भी लीड कोड करना है डीएसए पे, see that's important in its own way. ठीक है. Don't just mix up everything. आपका डोमेन is is your bread and butter. ठीक है. आपका डोमेन will be your bread and butter. डीएसए will be the key through which you can get into that company. ठीक है. Because every company in technical in software line, in software domain, asks about the DSA part, DSA part, because algorithms के बिना you can't work on servers. ठीक है. आप किसी भी जगह पे काम नहीं कर सकते हो. सर्चिंग सॉर्टिंग अगर algorithms आपको नहीं आते हैं, it will be very difficult for you to like work on systems जो उस particular company ने डिजाइन किए हैं. ठीक है. जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स को पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी, यू हैव टू बी वेरी गुड इन योर डीएसए. So how data are getting stored, how data are getting retrieved, everything is based on DSA. But don't just go into DSA that much कि आप अपने डोमेन पे ही टाइम नहीं दे पा रहे हो. ठीक है. Just try to balance both things. ठीक है. So apart from this, college struggles, what I saw in my tenure in this college was कि a lot of students like उन लोग को टेक्निकल क्लब्स में घुसना उतना पसंद नहीं आता. Like in our colleges we do recruitments. तो हम लोग को पता है कि like students के क्या thinking रहती है कि sometimes they think कि भाई कॉलेज का burden बहुत ज़्यादा है, तो मे बी शायद से अगर मैं इसमें नहीं घुसूँ अभी के लिए, so I can study more, I can focus more on my work and all. But आपको एक चीज पता होनी चाहिए. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, दीज आर द लाइक बेस वेयर यू हैव टू वर्क on your soft skills also. Soft skills is very important in terms for your job interviews. अगर आप टेक्निकली बहुत साउंड हो, है ना, बट यू आर नॉट नो इंटरेस्टिंग इनफ, तो कभी कभी रिक्रूटर्स होते हैं, स्पेशली दिस हैपेंस इन स्टार्टअप्स, है ना. Big corporations, maybe if you are going into product level companies like Microsoft or Google, they they do a lot of research on soft skills. वो ट्राई करते हैं कि अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे ताकि वो ओवरऑल एज अ ह्यूमन वो बढ़े. ठीक है. तो सॉफ्ट स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. पब्लिक स्पीकिंग, यू नो, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर पा रहे हो राइट नाउ, इफ आई एम टेलिंग यू टू कि आप कुछ बोलिए मेरे को, ठीक है, मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आप जस्ट मेरे से अपना कुछ क्वेरी पूछिए. तो व्हाट आई सॉ, यू गाइस, यू आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, सो दैट एक्चुअली इज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है. बिकॉज इफ समवन इज टेलिंग यू कि अगर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप नहीं पूछ रहे, दैट एक्चुअली कम्स एज अ प्रॉब्लम आपकी लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में. अभी के लिए तो लाइक देयर इज नो इशू, बट ट्राई कि आप लोग अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करो. आई आई होप आप लोगों के कॉलेजेस में ऐसे क्लब्स हैं जो आपके सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम करवाते हैं. इफ नॉट, इफ देयर आर नन, तो आप आगे जो ऐसे टेक्निकल डिबेट्स होते हैं, टेक्निकल टॉक्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, उसमें कोशिश कीजिए कि आप लोग थोड़ा आराम से आप क्या बोलते हैं, अपना सॉफ्ट स्किल्स को थोड़ा सा निखारें. ओके. So apart from these college struggles, I guess one more is the point of participating in hackathons. ठीक है. Hackathons are actually important, very much important. ठीक है. Hackathons is the what I think I've participated in during my college times. I have participated in almost um, 20 or 25 hackathons. Like till fourth year, I've participated for 25 hackathons, like ranging from Dell ka, Qualcomm ka, um, what can I say, Amazon के लिए भी we have done hackathons. We've got a team. हम लोग first second year से I'm friends with those guys, and like truly like talented people, and we have participated in a lot of hackathons. Yeah. So what I have gained from hackathons is what first, uh, networking. ठीक है. I got to know people जो actually में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं in their domains. ठीक है. And second thing is teamwork. ठीक है.
ऑल्दो वी आर टीम ऑफ 5, समटाइम्स हम लोग क्या बोलते हैं अपना एक दूसरे का काम देखते रहते हैं. लाइक समवन इज वर्किंग ऑन बैक एंड, आई एम वर्किंग ऑन AI, someone is working on the UI UX, other one is working on the front end, and everyone is working in different domains. But हम लोग वहाँ पे रुकते नहीं हैं. We try कि हम लोग एक दूसरे को भी समझाए कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं. ठीक है. So sometimes I uh, try to know about कि जो मेरा दोस्त है वो अभी बैकएंड में क्या कौन सी टेक्नोलॉजी सीख रहा है. ठीक है. एंड जो मैं हूँ, मैं उसको सिखाता रहता हूँ कि भाई AI ML में भी क्या क्या टेक्नोलॉजीज मैं यूज कर रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो इवन इफ दैट इज नॉट यू नो अगर आपके उसमें नहीं आ रहा है कि आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि क्या वो बंदा यूज कर रहा है, डजंट मीन कि आप लोग कोई किसी चीज में कम हो. बिकॉज what what actually happens is आप लोग communication सीखते हो इससे. Like working in corporates, working in companies, even in startups, and even in your personal life, communication is very important. ठीक है. अगर आप communication नहीं सीख पा रहे हो, you are not able to communicate with your uh, your what can I say, your teammates, that will actually cause a big problem in your projects. Right now I'm working at this organization, और मेरे को like दिन के 3 मीटिंग्स में करता रहता हूँ. Like we are on an agile mode. तो agile अगर आप लोगों ने कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कभी यूज करोगे, इट्स एक्चुअली कि हम लोग दिन में 3 मीटिंग्स करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे, जहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं थ्रू आउट द डे. एंड वन इज एट द नाइट, जहाँ पे हम लोग ये चीज़ें बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या उसमें बात करेंगे. ठीक है. हम लोगों ने क्या क्या काम किया, हम लोगों ने क्या क्या पूरा टाइम हम लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम किया, हम लोगों ने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कौन से मॉड्यूल्स पे काम किया, हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं. सो if I'm what can I say if I'm an introvert, ठीक है, तो that will cause a big problem because मेरे को फिर समझ ही नहीं आया कि what I'm doing right now. ठीक है. So yeah, communication is very important, and hackathons में you get to learn a lot about the technology that are being used in today's world. ठीक है. um, One more thing which I got to know from hackathons is that जो वर्ल्ड में कितनी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, लाइक कितने सारे डाइवर्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, एंड हम लोग उनको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस किस अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं. यू यू गेट टू नो मोर अबाउट द करंट प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. अगर आपको पता चलेगा कि कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मे बी यू कैन बिल्ड योर ओन सिस्टम ओवर इट. ठीक है. सो हैकाथॉन्स का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है पार्टिसिपेट करने का कि इट एक्चुअली जो आपके अंदर का जो कीड़ा है ना कि थोड़ा अलग तरीके कुछ करते हैं, एक्चुअली वो थोड़ा बाहर आता है. ठीक है. वन ऑफ माई फ्रेंड ही एक्चुअली he was actually doing this Dell's hackathon, and एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना, बहुत कॉमन, आई गेस आप लोगों ने भी सुना होगा इंडियन साइन लैंग्वेज का. उसको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला कि इंडियन साइन लैंग्वेज को ये करते हैं एंड उसको चेंज करते हैं एंड उसको टेक्स्ट फॉर्म में लेके आते हैं, मे बी टेक्स्ट टू स्पीच में भी कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके लिए एक AI ट्रांसलेटर बनाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. ठीक है. सो धीरे धीरे करके ही स्टार्टेड बिल्डिंग दैट प्रोजेक्ट इन थर्ड ईयर, एंड थर्ड ईयर के एंड तक आते आते ही एक्चुअली स्टार्टेड लाइकिंग इट कि मेरे को ये आइडिया समझ आ रहा है, मेरे को पसंद आ रहा है. और उसने इंक्यूबेशन सेंटर में जाके उसने इस आइडिया के लिए उसने फंडिंग वगैरह मांगी, एंड कॉलेज वाज लाइक ग्रेटफुल इनफ कि भाई उसने ऐसा कुछ काम किया है तो उसको लाइक फंडिंग मिल गई, एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग ऑन दैट ओनली. सो यू नेवर नो आपका कौन सा प्रोजेक्ट आपको कब पसंद आ जाएगा और आप उस पर क्या बना लोगे. ठीक है. सो ट्राई कि आप एज मच एज हैकाथॉन्स में पार्ट लो, ताकि क्या हो कि आपको हेल्प मिले चीज़ों को समझने के लिए और चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए. ठीक है. सो that will actually make a huge that will actually make a huge difference in your perception कि आप लोग कैसे सोचते हो. ठीक है. So these things actually they are the like बेस बनता है आपके
आगे ऊपर बढ़ने के लिए. Okay, so I think this much is what I felt from college, जो आप लोग को change करना चाहिए अपने perception में from second year, third year. Himanshu, आपको कोई question है? You can ask. Yes, sir. Sir, what would you suggest to a first year E3 branch student? I'm sorry, आपकी आवाज़ कट रही है. Sir, what would you suggest to a first year E3 branch student? Can you write your question in the chat if I'm not, because सुनने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है. Just write it. Others, if you have question and आप लोग को अगर सामने पूछने का मन नहीं करे, you can write those questions in the chat. I can answer them. Himanshu, just write your question in the chat. Others, like, or if you have any like problems you faced in college that you want to discuss, you can ask them. Good evening, sir. Sir, Oh, my good name is evening, Yash. Yash. My Hmm. name is Sir. I wanted to ask a question related to hackathons. Uh, Mm-hmm. that when you that what's the time for you? Then you find I have to participate in hackathons uh, like your confidence will you like you are in second year and you don't much prepared but you think I have to participate for this hackathon. But Hmm. if you participate and you don't do and you don't much do great there, then your confidence level will decrease. Hmm. Understood. Okay. So, okay, that's actually a very big problem which happens to a lot of second year students. And in fact, that happens with a lot of fourth year students also, because at the end हम लोग सब लोग ह्यूमन है तो वो इशू होते ही हैं. हिमांशु, आई विल कम टू योर क्वेश्चन. फर्स्ट मैं इसका आंसर कर देता हूँ. What happens is, if something like this happens, like if you are not doing well in your hackathon, right now we are participating in a Accenture hackathon, and what happened was, मेरी teammates में there were two second years. Okay, we three of us we were from fourth year, and two of them they were from second year. ठीक है. What happened was, उन लोग का भी सेम क्वेश्चन था कि भैया हम लोग का यूज क्या है, हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को आता भी नहीं है. वेल, दैट क्वेश्चन एक्चुअली इज समवॉट लेजिट कि हाँ हम लोग तुम्हें टीम में लेके भी करके करेंगे क्या. बट अगेन, हमसे वो क्वेश्चन पूछने से पहले यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि इवन तो अगर आपको वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं आता है, can you not learn it while being in the team and interacting with us? Like, in general, agar main aapke liye baat karu, if you are in a team, let's say with seniors or with your own classmates, आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस से बहुत कुछ सीखते हो. यू नो, फ्रॉम कमिंग फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन अ हैकाथॉन टू नोइंग कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है. अरे भाई, इफ यू आर ट्राइंग, आप किसी क्वेश्चन पे अगर अटक जाते हो, यू ट्राई टू गूगल इट, यू ट्राई टू चैट जीपीटी इट, है ना. यू यू डू वट एवर इट्स नीडेड कि आपको वो आंसर मिल जाए. ठीक है, जस्ट डू द सेम थिंग विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑल्सो. इवेंचुअली अगर आपको आंसर नहीं भी मिलेगा, यू लर्न समथिंग. And right now, learning is the key for you. Yes, are you in second year? Yes, sir. Okay, so in second year, that's the main thing which should be like your front. आपके जो फ्रंट लोब्स में है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सॉरी ये पर्टिकुलर थॉट आपके दिमाग में रहना चाहिए फ्रंटल लोब्स में कि भाई देखो, मेरे को सीखना है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, जीपीटी से मिल रहा है या फिर गिटहब से प्रोजेक्ट उठा के मैं देख ले रहा हूँ. डजंट मैटर, आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे, इवेंचुअली आपको कुछ ना कुछ तो समझ आएगा ना. एंड दैट विल एक्चुअली लाइक स्टार्ट आपका आपका जो
जो क्वेश्चन था आपका, जो थॉट था कि कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, जरूर थोड़ा बहुत गिरता है, बिकॉज किसी को भी पसंद नहीं आता कि उसकी टीम डिस्क्वालीफाइड हो गई है, बट आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि हाँ, दिस इज वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ, आई नीड टू लर्न मोर, और आप इवेंचुअली किसी ना किसी डोमेन में आप घुसने की कोशिश करोगे. Okay, focus should be you getting the knowledge from the problem statement, not कि भाई आप उस problem statement को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बिल्कुल फाड़ दो, बिल्कुल उसमें उस particular problem statement में आप king बन जाओ. That's not gonna happen in second year, and that you also know, I also know, है ना? तो just try करो कि you are learning something. Confidence तो down होता ही रहेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है ना? वो वापस up हो जाएगा. Just try करो कि you are learning something from that particular problem statement. Okay. Uh, are you like satisfied, or like do you want to ask something more? Yes, I satisfied. Okay. Himanshu. Okay. So what will you suggest to a first year EC student? Okay. EC branch. Himanshu, are you in third year or second year? The first year. अरे वाह, फर्स्ट ईयर्स भी हमारे पास. ओके, गुड. फर्स्ट ईयर भाई, देखो यार, फर्स्ट ईयर्स का तो यार सीन ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत ना आप लोगों को बिल्कुल अलग ही आप लोग रहते हो. मतलब मैंने देखा ये चीज हमारे कॉलेज में, लाइक फर्स्ट ईयर्स दे एक्चुअली गो टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट डोमेन्स, बिकॉज उनके पास टाइम होता है. यू ऑल्सो हैव टाइम. फॉर ईसी स्टूडेंट्स आई गेस द मोस्ट like demanding domain right now I saw, and right now I am also very interested in that, is robotics, है ना? आप लोग रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा आ सकते हो, इवन दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी लोग बहुत घुस जाते हैं रोबोटिक्स में, बट आई थिंक समवन हु नोज सर्किट्स एंड समवन हु नोज लाइक हाउ टू बिल्ड सर्किट्स, how to design circuits, has a huge opportunity in today's space, because every hardware software company, they are trying to build their own system, they are trying to build their own circuits. ठीक है, ताकि उन लोगों को रिलाय ना करना पड़े किसी और के ऊपर. You have your knowledge on semiconductors. Semiconductor market is the biggest right now. ठीक है, आप लोग उसमें घुसो. ठीक है, you have, firstly I'll not like go into much detail क्योंकि अभी तेरे को बहुत कुछ सीखना है ना? So I'll just tell you, just go and what आपको अभी कौन से आप अभी like domains के बारे में जानते हैं हिमांशु? If you're not like if there is no issue, आप बता सके तो बताइए कि कौन से डोमेन्स में आपको पसंद है काम करना. कितनों के बारे में सुना है? काम तो चलो छोड़ो, सीख सुना Sir, किसके बारे में? VLSI. हम्म. Uh, VLSI. yes, sir. Okay. Have you heard? Have you any? Have you got any interest in telecommunication? Yes, Have sir. you heard it? Okay. So VLSI, telecommunication, these are very like demanding right now. है ना? बहुत डिमांड है अभी इन चीजों का. ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन इज चेंजिंग रैपिडली. ठीक है, यू गॉट 6G ऑलरेडी. ठीक है, और भी आगे हम लोग के पास 7G 8G पे भी काम शुरू हो चुका है ना? different types of telecommunication gadgets are being made to facilitate these particular technologies into like रूरल इंडिया. ठीक है, ऐसे 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 टेक्नोलॉजीज को रूरल इंडिया में पहुंचाने के लिए बहुत सारे न्यू गैजेट्स की अभी इन्वेंशन होने वाली है एंड हो रही है, और ना. सो यू हैव टू बी इन दैट ग्रुप, है ना? आपको उस पर्टिकुलर जो एज है उसमें आना पड़ेगा. ठीक है, सो स्टार्ट वर्किंग विथ योर सर्किट बिल्डिंग स्टफ, सर्किट बिल्डिंग, व्हाट यू कैन से स्किल्स. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में सीखिए, है ना? गेट्स है हमारे पास, TCLD, डिजिटल सर्किटरी एंड लॉजिक गेट्स, उसके बारे में सीखिए. ठीक है, सर्किट डिजाइन करना सीखिए, कैसे डिजाइन होते हैं, है ना? Inside EC also, from one of my, if I'm being that frank, in EC, although मेरे को कोई experience नहीं है, but I have worked in
one company called HLPS Technologies, and inside that company, okay, Anamika, after this I'll take your question. Uh, I've worked in this particular company called HLPS Technologies, and I was an embedded software engineer. ठीक है. What do you think? Do you from this panel, do anyone know कि what is embedded systems? किसी को पता है? Raise their hand if someone knows what is embedded systems. Okay, Yash knows. Yash, क्या होता है अगर आप बोल सके तो? सर आई थिंक एम्बेडेड सिस्टम्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. Yeah, he is right. Yeah. So embedded systems का एक ही काम होता है कि वो एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करती है. ठीक है, उनके पास उतना मेमोरी नहीं होता, उतने कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर्स नहीं होते. दे जस्ट वर्क ऑन अ पर्टिकुलर सिंपल टास्क. नाउ अ लॉट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एक्चुअली मेक अ बिग गैजेट, और टेक्नोलॉजी के जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो एम्बेडेड सिस्टम से ही चलते हैं. ठीक है, राइट नाउ सिंपल सेंसर. ठीक है, एक सिंपल जो तुम सर्किट बोर्ड पे आप सेंसर्स बनाते हैं या फिर आप कंप्यूटर विजन के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, दैट इज एक्चुअली एन एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, आपका जो कोई भी अगर पर्टिकुलर गैजेट अगर कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, दैट इज एन एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है. सो आई हैव वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन फॉर लाइक 2-3 months. ठीक है, मेरे समर इंटर्नशिप में मैंने काम किया था, एंड व्हाट आई गॉट टू नो वाज अबाउट दिस दिस पर्टिकुलर जॉब जो आपका एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग होता है, दैट एक्चुअली कम्स अंडर ईसी डिपार्टमेंट. बट आज के टाइम पे एक्चुअली एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड दैट इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैन डिजाइन सर्किट बोर्ड्स. है ना, यू गॉट सॉफ्टवेयर्स कि आप सर्किट बोर्ड्स डिजाइन कर सकते हो, एंड उसको डिजाइन करके उसको टेस्ट भी कर सकते हो. सो आई हैव लर्न लाइक लैंग्वेजेस लाइक एम्बेडेड सी. ठीक है. सो फॉर हिमांशु आई एम सेइंग दिस कि you can also go into कोडिंग दिस पर्टिकुलर. आप अपने आर्डुइनो सीख सकते हो. ठीक है, रास्पबेरी पाई लेके आओ, माइक्रो कंट्रोलर लेके आओ. ठीक है, ट्राई करो उन पे कैसे आप कोड कर सकते हो. ठीक है, कोड करो उस पे. you've got नाजम नेटवाइड असेंबलर, जिसपे आप असेंबली लेवल लैंग्वेज कोडिंग सीख सकते हैं. ठीक है, असेंबली लेवल लैंग्वेज कोडिंग सीखें, बिकॉज इफ यू आर नॉट लाइक अगर आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, सो आई वुड लाइक टू से कि असेंबली लैंग्वेज इज एक्चुअली द बेस फॉर एवरी सिंगल कंप्यूटर सिस्टम. एवरी सिंगल जो आप बाइट्स में, हम लोग बिट्स एंड बाइट्स में बात करते हैं, एट द एंड सब कुछ असेंबली कोड में ही जनरेट होता है. दैट इज वेयर द मशीन कुड अंडरस्टैंड योर कोड, बिकॉज यू आर राइटिंग एन हायर लेवल लैंग्वेज. और धीरे धीरे करके थ्रू द कंपाइलर, एवरी सिंगल विथ एवरी सिंगल स्टेप आपका जो कोड होता है, दैट इज बीइंग डिकोडेड इनटू अ मशीन कोड. एंड दिस मशीन कोड इज बीइंग अंडरस्टूड बाय द हार्डवेयर. अगर आपको हार्डवेयर ही सीखना है, तो अब हार्डवेयर के लिए असेंबली लैंग्वेज कोड को आपको सीखना ही पड़ेगा. एंड इन अ लॉट ऑफ लाइक डिफरेंट aspects of life, aspects of work, we need to learn about assembly level language. So assembly seekna is important. I'll not say it's a necessity, but yeah, it's very important if you are going into robotics. Or right now मैं जैसे autonomous vehicles पे कभी काम कर रहा हूँ, so I need to learn a lot about assembly codes. I need to understand those codes because बहुत important होता है वो मेरे day to day work के लिए. ठीक है, so you can think about this line also. Start learning about assembly level language. अगर आपको assembly level language को अगर और अच्छे से समझना है, I've got सबसे बेस्ट है ट्यूटोरियल पॉइंट. भाई ट्यूटोरियल पॉइंट पे सीखो, आराम से निकालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. आगे आपके पास और भी चीज़ें हैं, लाइक व्हाट कैन आई से, एम्बेडेड सी आप सीख सकते हो, बिकॉज एम्बेडेड सी इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, और जिससे आप माइक्रो कंट्रोलर्स को हैंडल कर सकते हो. आपको उसमें भी असेंबली में लिखना पड़ेगा, बट इट गिव्स अ गुड एक्सपीरियंस. एक एक्सपीरियंस बेटर होता है उसमें एम्बेडेड सी में. दिस इज व्हाट आई से. So yeah, I'll not go much into details for embedded C because फिर ये interaction नहीं पूरा workshop बन जाएगा.
So yeah, Himanshu, do you have any other questions? Okay. Now Anamika Soni. Okay. So okay. ठीक है. Data science. How many of you actually want to go into data science? Just raise your hand. Okay, 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 okay. Got a lot of people here. Okay, so data science. If you're just going towards data science, अच्छे से बात करते हैं फिर. Data science में देखो, सीन ऐसा है कि you need to learn a lot of statistics. ठीक है. Data science is about retrieval, processing, analysis of data. ठीक है. कंपनीज के पास बहुत बड़े बड़े सेट्स ऑफ डेटास आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ठीक है. फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट. ठीक है. डीबीएमएस सीखना पड़ेगा, एंड दैट टू from start from SQL, go to NoSQLs. ठीक है. You can go to Azure, start learning about cloud computing. ठीक है. अब इतना कुछ बोल दिया है, ये तो हम सीख नहीं सकते. एज अनामिका टोल्ड मी कि शी इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में you've got time and you can learn. That is what I can tell you. Cloud computing के बारे में सीखो. ठीक है. Cloud computing में you have to learn what is whatever cloud computing platform you want to choose. You can AWS आपके पास है. ठीक है. Google Cloud है आपके पास, Azure है ना. ये सारी चीज़ें आपके पास है जिसके बारे में आप सीख सकते हैं. आपको डेटा रिट्रीवल सीखना पड़ेगा वहाँ से कि आप डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हो. ठीक है. देन सेकेंडली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए फ्रॉम numpy, pandas to complex data changing, what can I say, data analysis algorithms. Like you have to learn about decision trees, जो complex analysis हम लोग करते हैं data sets के ऊपर, to know about the end जो हम लोग को end product निकालना पड़ता है. That is something which the company gives you. Like let's say if you're doing class imbalancing, or you are doing something anomaly detection, and so these are the work which are given to data science data analysts. ठीक है. uh, आप लोग को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. So for that you need to have a good concept in DBMS. First of all, DBMS is very important in a software developer's life, because आपको हमेशा you have to play with data, you have to play with a lot of different unstructured data. पहले तो आपको unstructured data ही मिलेगा. आपको unstructured data को आपको accumulate करके आपको एक readable data बनाना पड़ेगा that you can show to your team lead. And आपको readable data को फिर आपको process करना पड़ेगा, and you have to learn a lot about processing different data. Not all data are supposed to uh, processed in a supposed to process in the same way. You have to process them in a different way. ठीक है. आपके पास इंटीजर डेटा है तो आपको उसको अलग तरीके से करना पड़ेगा. स्ट्रिंग में तो उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करके अलग से करना पड़ेगा. लॉट्स ऑफ दिस एंड दैट होता रहेगा, हॉश पॉश होता रहेगा. बट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन डीबीएमएस एंड ऑन योर डेटा एनालिटिक्स स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. आपको स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड आपको सीखना पड़ेगा. पाई चार्ट्स बनाना सीखना पड़ेगा. वेल दैट इज completely handled by Python libraries. तो आपको Python library के बारे में सीखना पड़ेगा. Python library में you have NumPy, you have pandas, you have matplotlib. Matplotlib आप particularly इन सारे data points को आप लोग क्या बोलते हैं visualize करोगे. So you need to visualize them. तो visualization के लिए you have matplotlib, you have NumPy, you have pandas. Pandas आप data frames बनाओगे. NumPy से आप अलग अलग data points को आप क्या बोलते हैं numpy से बेसिकली आप क्या करते हो कि आप जितने सारे डेटाज हैं आपके पास उन सबको आप एरेज में यू कैन स्टोर दैट इज डेटा टाइप. numpy एक्चुअली आपको इन सबका एक वास्ट लाइब्रेरी बना के देता है वेयर यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस विद दोज पर्टिकुलर एरेज ऑफ डेटा. ठीक है. आप उसमें अलग अलग तरीके से ऑपरेशंस बना कर सकते हैं. दैट इज मच इजियर देन क्रिएटिंग अ array in Python. I guess I I've seen this because NumPy I've used for the longest time. ठीक है. तो that is a very important skill that you should, important library that you should know. ठीक है.
apart from this, data scientists should also, what I, not data scientists, data scientists are different, data analysts are different. Okay, don't mix up these two you know posts, because ये दोनों terminologies ना पूरी तरीके से different है. You can't be a data scientist, है ना, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी. You, at some point you need to have you can get to a post of data analyst. Now there's one thing that can be triggering at the same time, but ये बोलने की जरूरत भी है कि uh, जो what can I say, जो careers like machine learning, data science, uh, feature engineering, these kind of stuff, these are not for entry. They are not supposed to be like open for entry level engineers, because entry level के लिए these kind of जो work आप लोग करते हो, basically ये सारे काम आप करते हो कंपनी के डेटा के ऊपर. So no company is dumb enough कि वो आपको अपना डेटा सेट आपको अपना सर्वर पे एक्सेस करने देगी. बिकॉज वो मीम आपने देखा ही होगा कि जो क्या बोलते हैं, इंटर्न को रखा एंड इंटर्न आफ्टर डिलीटिंग ऑल द डेटा फ्रॉम द सर्वर एंड रनिंग अवे. सो कोई भी बंदा, कोई भी कॉर्पोरेशन, वो आपको अपने डेटा सेट के ऊपर, अपने डेटा बेस के ऊपर काम करने को नहीं देगी. एंड इवन इफ इट इज गिविंग यू द एक्सेस, it will like want a lot of, it will ask for a lot of things. ठीक है. आपको डेटा साइंस करने से पहले, डेटा एनालिस्ट बनने से पहले, दिस आई एम टेलिंग टू एवरीवन, जस्ट ट्राई इंटर्निंग at some corporation as a junior data science engineer. डेटा साइंस इंजीनियर के ऊपर या तो आप काम करना शुरू कीजिए एज अ जूनियर डेटा साइंस इंजीनियर, और स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक which are more relevant towards analyzing analysis and analysis and processing of different kinds of data. If you're not having these kinds of skills in your CV, in your resume, it is very easy for the recruiter to just you know say कि आप लोग इस जॉब के लिए रेडी नहीं हो, because these kinds of fields now, they are not from entry level. Machine learning, even if I'm from that from that domain, I actually faced a lot of problems to get this job, because this particular field is not for entry level engineers. आपको at least 3 से 4, 5 से 6 साल आपको experience करना पड़ेगा. Now how I got it, I'll tell you in the uh, last segment of this discussion. um, Anamika, do you have any other question, or are you satisfied? uh, okay, sure, then I should just hop on to the next question. How to get first internship for second year students and guidance how to get. Okay, internships. A lot of internship आप लोग को मिल जाएगी at uh, I've personally felt that कि sites like Internshala and let's say people do Coursera sometimes, and Udemy लेते हैं लोग. I think that is very good for your like early stages of your career, है ना. You need to learn about skills, and जो उधर जो mentors मिलते, there some of them are actually very good. ठीक है. I have learned my machine learning skills. I have learned my data processing and model making skills from Udemy only. So I don't say that Udemy is like a complete wastage of money. If you're doing it correctly, that's actually very good. है ना. But doing that and showing it to your recruiter, that I am actually against of. है ना. आप वो करो अपने personal build-up के लिए. ठीक है. इसको एज अ अचीवमेंट आप कहीं पे अगर दिखाओगे, दैट विल एक्चुअली नॉट वर्क. ठीक है. नाउ फॉर इंटर्नशिप्स you have got sites like Unstop is like I am using it still now. ठीक है. मैं हमेशा Unstop पे बैठा रहता हूँ. I try to apply in as much as field as much as jobs as I can, and 90% से rejection होता है, but still yeah, no problem. So
internships के लिए you've got a lot of opportunities at Unstop. I have a love-hate relationship with LinkedIn, so I'll not say a lot of things about. I'll not say like it's bad, but I've got some experiences जहाँ पे मैं थोड़ा सा LinkedIn से थोड़ा दूर हो गया था इसलिए. But I've got friends who have got like the first internships from in LinkedIn, so you can think about LinkedIn पे if you've got an account, then you can just start approaching recruiters. ठीक है, start approaching HRs. And पहले तो भाई skills अपना थोड़ा अच्छे से develop कर लो, and start applying as many jobs as you can, because आपको, I can say it from, you know if you will ask me this same question like 5 years or 10 years later also, I will say अगर आप as a fresher हो, you'll get lots of rejections, and that is actually very important for you guys to know that rejections, you should not take it to your heart, because rejections आते रहते हैं, rejections बहुत आएंगे. इंडियन कंपनीज में तो रिजेक्शंस तो यार वो तो कभी कभी मेल्स भी नहीं भेजते, ठीक है, लटका के रखते हैं. यू हैव टू टॉक टू द एचआर, और कभी कभी आपको तो वो भी नहीं करना पड़ता, आपको जस्ट मूव ऑन करना पड़ता, ठीक है. तो या जो ये चीज़ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, ठीक है. इफ यू आर लाइक if you don't have any problem, can you just tell me कि आप किस डोमेन में काम करना अभी मतलब पसंद करते हैं? उत्सव कुमार. Good evening, sir. हाँ, Sir, good web evening. development. Okay, web development. Okay, so you must be knowing like आपको अभी सिर्फ HTML, CSS और JavaScript के आगे आता ही होगा, I guess. If you are thinking of this domain, you need to learn about this. You need to learn about a lot of things like Angular आपको सीखना पड़ेगा. You have to React आपको सीखना पड़ेगा. आपको frameworks, आपको servers के बारे में जानना पड़ेगा. Web dev, like have you done anything like in terms of projects right now? What's No, up? sir. No, sir. Only simple project of HTML, CSS, and JavaScript. Okay, no problem. You're in second year. You've got time. Start, making projects. सबसे पहले एक काम करो. Web dev के लिए one of my friend, he is also working at a startup in Germany right now, है ना? And he's got a lot of startups right now. Sorry, he's working at a lot of startups right now. And what I saw was key. You should learn a lot about uh, you know just start by making a portfolio website, है ना? एक बार स्टार्ट करो उस चीज को, उस पर अच्छा खासा टाइम दो, स्किल्स दो. बिल्डिंग दैट थिंग विल गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट्स अबाउट योर फील्ड. आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी स्किल्स आप सीखोगे, and I think that will actually make you like a lot more competent when you will start applying for your internships. मैंने आपको साइट्स बताई दी, अनस्टॉप है, लिंक्डइन है. अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, यू हैव फ्रीलांसर, ठीक है, freelancer.com, आप उस पर भी काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है. ओके, सो if anyone has any other questions, and yeah, we should right now should move on to the main thing, which is नौकरी कैसे मिलेगी, ठीक है. तो अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की. फर्स्ट मैंने आपको बताया कि हाउ टू बिल्ड योर CV. फर्स्ट हैव relevant, what you can say, relevant works, ठीक है, relevant experiences which can actually make your CV stand out. ATS proof बनाओ अपने CV को, ठीक है. You've got a lot of templates, ठीक है. टेम्पलेट्स पे बनाओ अपना CV, ठीक है, अच्छे ATS स्कोर वाले टेम्पलेट्स पे बनाओ, और स्टार्ट करो अप्लाइंग
लाइक नॉट एक क्या बोलते हैं इन अ ब्रूट फोर्स वे ऑफ अप्लाइंग, मतलब जो दिखा जैसे दिखा बस अप्लाई कर दिया बिना कुछ सोचे समझे। नहीं भाई, अप्लाई करो ऐसे कि जिसमें आपको पता है कि आप कुछ बोल सकते हो अगर इंटरव्यू शेड्यूल होता है तो। ठीक है, स्टार्ट बाय डूइंग दैट। फर्स्ट रिज्यूमे, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिज्यूमे, स्टार्ट बिल्डिंग योर रिज्यूमे। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंसेस इफ थर्ड ईयर अगर आपके पास एक भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, try to have as many as like 5 projects at least, at most, and at most, at not at least, at most आप 5 projects डालो। ठीक है, 5 projects के बाद आप क्या कर सकते हो, यू कैन हैव लाइक स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स आपको देनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड I've done the same thing in my resume, so you know I'm confident enough कि ये चीज हेल्प करता है। um, Again, you can do one more thing. You can do one more thing is that instead of like applying straight away to Sunstop or uh, you know uh, LinkedIn or any other website, if you have, because a lot of companies like my company, if you can say, a lot of companies do this also कि वो लोग कभी ना अपना ये जो आप लोग के जो रिक्रूटमेंट फॉर्म्स होते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर्म्स कभी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स को नहीं देती है। ठीक है, लिंक्डइन, लिंक्डइन इज डिफरेंट, अनस्टॉप वगैरह ये जो भी थर्ड पार्टी मीडिएटर का काम करती है, विच कैन नो डू दीज थिंग्स फॉर द कॉर्पोरेशंस। बट बहुत सारी कॉर्पोरेशंस होती है वो कभी कभी बहुत साइलेंटली अपने वेबसाइट पे दे, आपको हर वेबसाइट वेबसाइट पे करियर ऑप्शन मिल जाएगा। दे होस्ट देयर पर्टिकुलर recruitment drives in that particular website only, in their own websites only. So what I did in this company was, I did not get this company from LinkedIn, I did not get this company from Unstock, I actually subscribed their newsletter। ये हर कंपनी का एक न्यूज़लेटर होता है, एंड इनसाइड दैट न्यूज़लेटर you actually get a lot of information about the company, कि उसका अगला क्या क्या वर्कशॉप्स आ रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ों पे काम कर रही है, एवरीथिंग। इट इट गिव्स यू एवरीथिंग लाइक फ्री एक्सेस। some of the companies it has a paid newsletter, some of them they have a free newsletter, to have a newsletter। ठीक है, start subscribing those newsletter। मैंने वो newsletter को subscribe किया, I started getting those news after like a month or so। मेरे को आया था कि we are having this particular job vacancy for AI and automation department, and we want 0 to 3 years of experience, so feel free to apply। तो मैंने अप्लाई किया। आफ्टर दैट आई गॉट लाइक I've मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1 महीना चला था। ठीक है, इट वाज लाइक फ्रॉम आई हैड अप्लाइड इन जून जून में अप्लाई किया, एंड जो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ वो जुलाई लास्ट वीक से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड फर्स्ट वाज माय सीवी राउंड, सो माय सीवी इट गॉट सिलेक्टेड। आई वाज सिटिंग फॉर दिस टेक्निकल क्विज, एक टेक्निकल क्विज है छोटा सा। आई गॉट दैट टेक्निकल क्विज। उसमें टेक्निकल क्विजेस इफ यू आर लाइक नो आपका जीके अगर स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप यू कैन इजीली क्रैक दैट। ठीक है, उसमें इतना दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो जानते रहिएगा, सुनते रहिएगा कि आसपास क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी वाइज, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। some of the companies they host these kind of events in the recruitment drive so that they can know कि आपको पता है कि what is happening around you। ठीक है, doesn't mean कि अगर आप वेब डेव में so you shouldn't know about AIML, or you're into AIML so you shouldn't know कि कौन से नए frameworks आ रहे हैं वेब डेव you know लैंग्वेजेस। ठीक है, तो कौन से नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, कैसे कैसे यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, यू शुड नो अबाउट दैट, जस्ट नो अबाउट दैट, डोंट नीड टू वर्क ऑन दैट, बट नो अबाउट दैट। ठीक है, सो आफ्टर द टेक्निकल क्विज मेरा स्टार्ट हुआ। आफ्टर द टेक्निकल क्विज आई गॉट अ 1 week टाइम। ठीक है, उसके बाद मेरा स्टार्ट हुआ टेक्निकल इंटरव्यू, and I was called for technical interview. There was one person, and he asked me a lot about DSA, inbuilt
एल्गोरिदम्स के बारे में पूछा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे, जो मैंने आपको बताया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ऑल्टरनेट अप्रोचेस, ठीक है। लाइव कोडिंग भी होता है उसमें। सो मेरे केस में मेरा 2 राउंड में हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू, एक टेक्निकल इंटरव्यू 1, एक टेक्निकल इंटरव्यू 2। सो टेक्निकल इंटरव्यू 2 में मेरे को लाइव कोडिंग करने को बोला था। सो आई वाज गिवन 3 क्वेश्चंस ऑफ टीएसए एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ एसक्यूएल। So I did that. After that, actually, I was given this particular assignment. इसके बाद I got a time of like 2 weeks or so, and after that, the company called me for a PBI, that is project-based interview. So project-based interview is a newer concept in recruitment world, because project-based interviews बहुत लोग नहीं लेते हैं, but अगर वो लेते हैं, that means they are seriously into product building stuff. ना तो उनने मेरे को टाइम दिया, दे टोल्ड मी कि आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, है ना, वी आर गिविंग यू 1 week of time, after the week will end, you have to submit the report. If we like your report and your findings and what you are doing, we love your approach, we'll call you for the final leg HR round. मैं बोला सही है, ठीक है। तो आई स्टार्टेड बिल्डिंग अपॉन दैट। मैंने एक ट्रांसफॉर्मर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया फॉर इंडियन ट्रांसफॉर्मर्स। जो आपके घर के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर्स रहते हैं, उनके रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया था। एंड आई गेव दैट रिपोर्ट टू द officials and they liked it. After that, I got my HR round. And HR round mein every single thing was asked from my code. They told me to share my code base. I shared my code base, and from every single cell they have asked at least 2 or 3 questions. And they have asked about alternate approaches, like if I've used TensorFlow, then why haven't you used PyTorch? Or if somewhere I have used PyTorch, then they are asking ki, acha, okay, but you could have done this like आपको GPU की इतनी जरूरत पड़ी, okay, ठीक है, but you could have done the same thing on TensorFlow. So alternate approaches इधर उधर चलते रहते हैं, ठीक है। Somewhere I've used sklearn's imputer, तो कहीं पे मेरे को मुन्ने बोला कि imputer क्यों use किया, you could have used something else, you could have used something like different, you have different imputation strategies, ठीक है। तो आपको कोई सिंपल अगर imputation strategy अगर आप बना के दे रहे हो, तो they will be asking you कि भाई कोई complex क्यों नहीं use किया, कुछ और क्यों नहीं use किया। So they were asking from different left, right, center, वो हर जगह से question फेंक रहे थे ना। But the thing which I will tell you in HR round is that कि HR round में you have to be very calm, ठीक है। You will get questions from left, right, center, ठीक है, but you have to be very calm, because अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी if you get tensed और आप थोड़ा बहुत इधर उधर करने लग गए ना, so people will actually be like, जो सामने HR बैठे हैं, they will actually like sense that thing from the computer screen. And just never, मैं ये चीज बोलूंगा, I've like seen people जो लोग इस राउंड में like कोशिश करते कि चलो चैट जीप, क्योंकि गूगल कोलैब पे हो रहा है, सॉरी गूगल मीट पे हो रहा है, जस्ट साइड बाय साइड वो निकाल लिया, या फिर फोन पे चैट जीपीटी यूज कर लिया। प्लीज यार, इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट ड्राइव में कभी चीटिंग मत करना, बिकॉज अगर चीटिंग में पकड़े गए, सो आपको बैन कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर सकती कंपनी आपको। फालतू में क्यों ले रहे हो लफड़ा, है ना। सो जस्ट नेवर डू चीटिंग इन दीज काइंड्स ऑफ लाइक serious in serious jobs, don't do cheating, ठीक है। and again one thing is कि आपके पास अच्छा खासा ये होना चाहिए, what you can say this whatever, आपके पास अच्छा खासा calmness होना चाहिए आपके अंदर for HR rounds, ठीक है। now this was actually my experience, and again this particular experience, उसके एक हफ्ते बाद I got an offer for कि मुझे ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ऑफर हो रही है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ऑफर आई डिड माय ट्रेनिंग इन LLM मॉडल्स, ठीक है। आई वर्कड ऑन जेन AI, a lot of you know a I built a lot of like um, artificial intelligence agents, ठीक है। So you have to build those things to they work as an API for your artificial intelligence systems, ठीक है। AI systems के लिए you got AI agents, so AI agents आपको यूज हेल्प करता है to
transform your data or transfer your data to one API socket to one another API socket, तो काम चलता रहता है. So this was my particular journey. Now, what I told you in this particular segment was कि you have to start by building your CV, then start applying. ठीक है, apply करते रहो. Rejections आते रहेंगे, still apply. ठीक है. After you got your first interview, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई, cheating मत करना. ठीक है. And third thing is, after that fourth thing is कि अगर HR राउंड तक हो जाता है, stay calm, because अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो easily आपको reject कर सकते हैं. They've got a lot of points to reject you, but they actually find a single point to hire you. एक single point, if you can give them, either that is your soft skill or your technical skill, they'll hire you. That's for sure. Okay. And if on that thought only, we'll hop on to the next segment, that is the Indian market. Indian market may be same ही scene है. If you are like working, if you are working, then it's so आपको पता ही होगा क्या scene है. If for you guys, actually Indian market is very much centralized towards the SG position. That's what I've seen this thing कि बहुत ज़्यादा it is centralized and not very sectorial. Like बाहर चीजें are very sectorial. ठीक है, you've got different teams to handle different type of jobs. You've got a cybersecurity team. You've got a different team to handle the data processing. You've got a different set of people to do data analysis. आपके पास different set of people होती है to do the model evaluation, model planning, model uh, designing. So Indian market is what? It's like very much centered and not very sectorial. बहुत ज़्यादा centralized field है. ठीक है. So आपको अगर इस market में अगर घुसना है, firstly you need to have, that is for everything, CV अच्छा होना चाहिए. Second thing is that you need to be very good in DSA. ठीक है, to enter into a company. In any company, Indian market में it's just different कि आपके पास options खुल जाते हैं a lot. Because bahar, if you don't have experiences, relevant experiences, it will cause a huge problem. ठीक है. Indian companies में even if you don't have experiences, अगर आपके पास relevant projects है, you can easily crack it. ठीक है. Third thing is आपका communication अच्छा होना चाहिए. ठीक है, आपकी communication skills बहुत अच्छी होनी चाहिए. And apart from these things, what I also think is that कि आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, वो है कि आपका जो फंडामेंटल्स है एंड योर डोमेन शुड बी लाइक वेरी क्लियर, है ना, इन योर सीवी. लाइक स्टार्ट बिल्डिंग योर सीवी कि वो आपका डोमेन स्पेसिफाई करे. डोंट जस्ट ऐड एनीथिंग टू योर सीवी. इफ यू आर वेब डेव गाय, just make web dev, just add web dev projects. Don't add lot of different projects that will actually make your CV बहुत ज़्यादा like clumsy. That's what I saw in Indian markets, because every time I started, working, I started my interview, everyone was asking कि आपके CV में you've got hardware stuff also, you've got software stuff also. So what are you good in? Okay, that actually is a question. Like you're jack of all trades and master of none, है ना? तो वैसा हो जाएगा. Don't be that guy. ठीक है. आपको ऐसा एक पर्टिकुलर आप सीवी पकड़िए जहाँ पे आपके पास, अगर आप if you're doing web dev, just stick on to that projects. You should have those particular skills that will help you to get into other domains, but वो later on के लिए. Just start by going into a company with a single domain. Don't just add so many domains कि सब confuse हो जाए. आप भी confuse हो जाओ. Because you can't have so many things in your mind, है ना? Because हर एक field अपने अलग तरीके से tough है. ठीक है. So just don't have so many fields, so many domains in your CV when you can just have one domain, and that domain should be like very much relevant in today's world. ठीक है. ऐसा नहीं कि भाई आपने वेब डेव डाल दिया तो सारे बस फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स डाल के रखे हुए, वेबसाइट बनाया हमने. दैट विल नॉट वर्क. ठीक है. तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करो अपना सीवी को, थोड़ा अच्छे से बनाओ.
ठीक है, उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का अलग अलग वो बनाओ, क्या बोलते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट्स बनाओ, और कोशिश करो कि अपनी सीवी को कितना अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। सो if you have any questions in about this, like how to get into companies, uh, if you are like targeting any Indian company or something, like आपके पास कोई Indian company, not Indian company, like what do you guys, if you guys have any question for like this particular segment, you can ask. Yeah. Okay. So I guess the okay, Nidhi, ask me. Yes, hello, sir. Sir, I Mhm. wanted to ask that I want to get into AI/ML. So, Mm. what should be my first approach? Like, I'm in third year now. Fifth Mm. sem is completed. A sixth sem will be starting. So, what should be my approach to get into Okay. this AI/ML field? Okay. Yeah. Yeah. So the okay, so we have to like go into the beginning. Okay. AIML is not is what I think. AIML is the only independent field where it is not dependent on any other particular field. ठीक है, it has its own development cycle. ठीक है, if you guys have this subject called software engineering, you'll be learning about a lot on uh, development cycles. ठीक है, you have waterfall model, and you have lots of models, you have agile model, you have like so many models. So this is particularly to development. ML development is slightly different. ठीक है, you have to know certain things which normal developers they don't usually like uh, they don't have those skills, but you should have those skills. So from the start, if I'm talking about, you should know about the first thing that should be like very much clear is your mathematics. Okay, now this will actually this actually causes a lot of problem for early stage AIML engineers, because maths हम किसी की strong नहीं होती है, that we know. ठीक है, तो you should have a strong hold on maths, especially in probability, um, probability, trigonometry. ठीक है, um, sorry. Yes, sir, I was agreeing with your point. Yeah, okay. So trigonometry, and you should have a lot of things about, somewhere it is very much needed, but somewhere it is not, you should know a lot about differentiation also. Differentiation calculus is very important, not like in the advanced stage, not for the advanced stage, but you know you should know about certain like the basics of differentiation and differentiation and integration. Okay, so maths is very important for this thing. Okay, and again, after maths, the thing which I noticed, which I actually did, was you should have a lot of experience in uh, libraries like NumPy, Pandas, and you should like be very much confident in uh, DSA. ठीक है, because at the end क्या होता है ना, DSA is uh, what happens is कि आपके पास मैथ्स है, मैथ्स, ठीक है, यू नो लाइब्रेरीज ऑल्सो, बट व्हाट हैपेंस एट द लास्ट इज, अगर आपको डेटा रिट्रीवल और डेटा को प्रोसेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स वेयर डीएसए कम्स. तो डीएसए आपको होना चाहिए, आपको डेटा के साथ खेलना पड़ेगा. प्रोसेसिंग के लिए आपके पास यू नीड टू लर्न अबाउट पाइपलाइनिंग. ठीक है, पाइपलाइनिंग के साथ साथ यू नीड टू लर्न अ लॉट अबाउट different kinds of frameworks. I think that should be your first step. Firstly, start with maths. अच्छा खासा अगर maths आता है, ठीक है, start working on with one framework, TensorFlow or PyTorch. If you're working with TensorFlow, well and good. Google का है, open source है, हमेशा changes होते रहते हैं. Second thing is your this thing. What?
PyTorch, अगर PyTorch कर रहे हो, it is very GPU friendly, आप GPU पे बहुत easily काम कर सकते हो इससे, ठीक है. So this two things you need to learn about those things. TensorFlow या तो PyTorch, any other framework is also available, but it is not supported by a lot of like systems, है ना. So आपको ये दो चीजें में से कोई एक चीज चूज कर लो, TensorFlow या तो PyTorch. I personally use TensorFlow, but I've also learned PyTorch because ये hand in hand चलते रहते हैं आपके हर एक प्रोजेक्ट्स के साथ साथ. प्रोजेक्ट्स चेंज होते हैं तो आपको PyTorch में शिफ्ट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स अगर और चेंज होते हैं तो आपको TensorFlow PyTorch उनको मिक्स करना पड़ता है, ठीक है. TensorFlow, if I'll be like that honest, TensorFlow is only good for making models, like designing models. It is not, and for data augmentation, ठीक है. Other than that, I don't think so कि TensorFlow उतना अच्छा है. You can do visualization also, but at the end अगर आपको core logics लिखने रहते हैं, so you have to choose for PyTorch. So आप दोनों ही सीखो, मैं तो आपको बोलूँगा दोनों ही सीखो आप. Apart from that, maths frameworks. Now we'll go into pipelining. मतलब आपको डेटा सोर्स पाइपलाइनिंग करनी पड़ती है, तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. क्योंकि अभी आजकल हर कंपनीज क्लाउड पे ही अपना डेटा स्टोर करती है, ठीक है. तो यू नीड टू लर्न अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा को कैसे वहां से रिट्रीव करते हैं, उसको प्रोसेस कैसे करते हैं. पाइपलाइनिंग डिजाइनिंग में आपको बहुत सारे डिफरेंट चीजें सीखनी पड़ेंगी, लाइक समथिंग like in autonomous vehicles right now I'm working on lane detection, okay. So what we do is, there is a car has a chassis, ठीक है. and chassis में क्या होता है, there are different types of sensors, ठीक है. So these sensors actually they help in retrieving the data, and these data actually they help you to get, your these data actually forms your data points, ठीक है. And what we do is we created this data source pipeline, जो pipeline आपको help करता है to pre process this data, और वो data जो होगा वो pre process जैसे ही होता रहेगा, that will be more easier for the model to process, ठीक है. So yeah, you need to learn a lot about different kinds of pipelining, and this thing will be like very important. And after that, after this, you need to learn a lot about different kinds of algorithms. Yeah, the main thing, algorithms, neural networks, ANNs, artificial neural networks. क्या बोलते हैं, आपके परसेप्ट्रॉन्स आपके बारे में आपको सीखना पड़ेगा, डिफरेंट मॉडल्स के बारे में सीखना पड़ेगा, ठीक है. So these kinds of stuff you have to learn, and that will take a lot of times, and that will take a lot of time, I know, because at the end तो आप अभी किस में, थर्ड ईयर में हैं, and I think you should just focus on right now what it is कि आप focus करो अपने frameworks पे, and you should focus on your model building skills. Deployment पे भी मत जाओ, because deployment is very huge. You need to learn about ML ops. आपको अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेंगी ML ops में, क्लाउड कंप्यूटिंग भी सीखना पड़ेगा. डिप्लॉयमेंट के बाद आपको मॉनिटरिंग पर सीखना पड़ेगा, तो मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग चीजें यूज होती हैं. So yeah, so right now you should work totally on your on your framework, that is TensorFlow or PyTorch, and start working on your modeling part. If if you don't mind, just tell me कि आप कौन से फील्ड में काम करना चाहते हैं. Like, do you work on computer vision, like in digital image processing, or in NLP? Sir, I am currently made a project on computer vision, face recognition, so I'm working on that. Okay, face recognition. So do you have any interest? Do you have interest in? I think you have interest in computer visions, like, Yes, sir. Yes, yeah. sir. Okay. Okay, so you need to learn about digital image processing. ठीक है, digital image processing में you need to learn about what is how can I say, every image is like a set of pixels, ठीक है. And actually an image is just a matrix. If you can like narrow it down to that level, अगर आप narrow करोगे तो is at the basics it's just a matrix
जिस मैट्रिक्स को आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक फॉर्मुलेट करते रहते हो, आप लोग प्रोसेसिंग करते रहते हो उसमें, ठीक है. सो फॉर कंप्यूटर विजन्स व्हाट आई थिंक इज कि यू शुड लर्न अबाउट you should learn a lot of things like there are different filtration techniques. ठीक है, आप filtrate कर सकते हो. You need to learn about OpenCV. OpenCV के OpenCV तो is good, ठीक है, but when you'll be working in industry you'll be knowing कि या आपको उन particular endpoints को जोड़ने के लिए C++ में कोड करना पड़ेगा. Okay, so yeah, that's actually very new for AIML engineers right now. But we are also doing that. हम लोगों को भी अपने endpoints जो होते हैं वो C++ पे कोड करना पड़ता है, ठीक है. सो C++ मत भूल जाना पाइथन को लेके, ठीक है. तो C++ will actually be very helpful in your later on stages. जब आप अपने इंडस्ट्री में घुसोगी तो आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा C++ to add those endpoints. From one endpoint you have to go to the next endpoint, and those endpoints are being क्या बोलते हैं उसको, आपको लिखना पड़ता है in C++ और C, like up to you. सो फिल्ट्रेशन टेक्निक्स के बारे में आप सीखिए. आप डिफरेंट डेटा ऑगमेंटेशन स्किल्स सीखिए. डेटा ऑगमेंटेशन बहुत टाइप्स होता है, आपको वो सीखना पड़ेगा. उसके बाद डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में यू शुड आल्सो लर्न about how to retrieve data from data, because बहुत टाइम क्या होता है, डेटा जो रहता है बहुत लाइक अनस्ट्रक्चर्ड आता है. लाइक डेटा अगर ज्यादा पिक्सेलेट हो गया तो हाउ टू हैंडल दोज, है ना. तो उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है. डेटा क्लीनिंग आनी चाहिए, डेटा को क्लीन करना, डेटा प्रोसेस करना. नाउ these actually comes under the your what you can say your डेटा साइंस कैटेगरी. तो जितने लोग भी डेटा साइंस करते हो, सो या इमेज प्रोसेसिंग में यू शुड डेटा प्रोसेसिंग आपको सीखना पड़ेगा. अगर आप डेटा साइंस में भी अगर करते हो, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, सो यू शुड लर्न अबाउट डेटा प्रोसेसिंग. ओके, सो इमेज प्रोसेसिंग में भी आपको जॉब मिल सकती है इफ यू आर गुड इनटू योर डेटा एनालिटिक्स skills. So that's a very good opportunity for data analysts over there. Apart from that, I think right now I'm sorry. So I wanted to ask that what are the companies that are giving the opportunity for computer vision professionals like students? Every single company is right now having a computer vision project. Okay, so computer vision is being used heavily by Amazon also. Okay, Google also. ठीक है. गूगल की तो अपनी खुद की लाइक अगर if you guys know about it, Viom बोल के कंपनी that is run by Alphabet. Okay, so we are very we are fortunate enough कि हम लोग उनके साथ भी काम करते हैं, and we also work as a lane detection team for Tesla also. So this particular thing what you are talking about is about companies. Every single company nowadays, if it is like into anything of sort of कि भाई तुम्हें like what you can say, मतलब अगर आपको किसी भी टाइप का कैमरा रिलेटेड वर्क है जो कि आजकल के हर टाइम में लाइक अगर आप मिंत्रा पे भी देखोगे, आप लोग मिंत्रा या फिर Amazon पे भी you've got like you know what like features where you can use your camera and you can better evaluate कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है. Let's say you can take a picture और picture का recommendation नीचे आ गया. So what is that? That is actually computer vision. Okay, so computer vision is used heavily by every sector. ठीक है. In energy field also, energy में भी अडानी ग्रुप भी यूज करता है. और मैंने देखा ही था पिछले कुछ दिनों में लाइक इस पे आया था, अनस्टॉक पे आया था कि अडानी ग्रुप ने अपना लाइक कंप्यूटर विजन्स की एक टीम बनाई है फॉर बेटर फैसिलिटेट देयर एनर्जी सेक्टर, ताकि वो लोग लाइक यूज कर सके ड्रोन टेक्नोलॉजी को, एंड दे कैन लाइक
take up images from from the sky, and they can like evaluate कि like अभी development में कौन सी जगह पे हम लोग develop कर सकते हैं. So architecture में भी you need to know computer vision के jobs हैं. आर्किटेक्चर हो गया, बिल्डर्स हो गए. बिल्डर्स भी आजकल जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं वो लोग भी यूज कर रहे हैं. सो फ्रॉम एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ तुम लोग को कंप्यूटर विजन की जरूरत पड़ेगी. सो योर क्वेश्चन, लाइक आई थिंक आई हैव आंसर्ड इट, बिकॉज आप अभी किसी भी कंपनी में अगर घुसोगे, लेट अलोन अगर आप किसी स्टार्टअप में भी घुसोगे, इफ दे आर मेकिंग समथिंग ऑन you know that can access your camera or something, they will need a computer vision engineer. But again, Nidhi, I would say this key, rather than just going straight up towards computer vision, you should better start from learning the core concepts of ML and deep learning. Because as of now, अगर आप थर्ड ईयर में हैं, आई डोंट थिंक सो कंप्यूटर विजन की जॉब इतनी इजीली, कंप्यूटर विजन इंजीनियर बनना लाइक एक थर्ड ईयर स्केल पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को, आई डोंट थिंक सो दे आर लाइक ओपन फॉर दैट. They need experienced people. So start working on projects that include computer vision and try to learn the core concepts and fundamentals of machine learning and deep learning and like other things like data augmentation and also feature engineering. आप ऐसी चीजों को सीखिए. After that, after you're getting like a solid 1 or 2 year experience, just after then only just go towards computer vision, like as a core computer vision engineer. You should apply for that after 2 or 3 years once you're getting that much experience. ठीक है, तो एक्सपीरियंस लो, उसके बाद किसी भी सेक्टोरियल फील्ड में घुसना. ठीक है. सो I think if anybody else is having any question, because I've like said a lot of things about like how you can like grow yourself in terms of technical and like your soft skills also. So I think uh, I'm done with my knowledge scale. मेरे को इतना ही नॉलेज अभी हाल तक, तो पहले तो पास हो जाऊं कल. ठीक है, तो इसलिए. So do you have any other questions, like any questions related to today's like so much जो blabbering हुआ, उसके बाद कुछ भी आपको अगर डाउट है आप पूछ सकते हो अभी. I'm open for it. I think nobody has any questions, so I think we should wrap it up. What do you guys? Okay, we have got a hand. Yes, tell me. So, can you share some basic data science projects that like right now I only know NumPy and Pandas and basic, very basic Matplotlib, and the mostly projects are available on internet like for these skills, hotel management and some and like yeah, hotel management, Hmm. though only this and one or two more. Hmm. Okay. So I need some. Base. Okay, okay, I understood. Basic level question, uh, basic level projects from what I have done. I have done like data science. For data science, I'm not talking about data science. I'm talking general, like for data analysis and pre-processing, like part of the project. You can work a lot on anomaly detection in different sectors. Okay, that is very basic because right now you just need a data set, and the data set can be used for like a lot of data set has a lot of today, like not on not real, but not really, but still a lot of data sets have inconsistencies. So you need to find those inconsistencies and you need to work on that, and you need to remove that, or maybe you need to have a growth chart where you can show like how data is getting degraded over time. So that is where I think you can
use your data science skills. So start by making anomaly detection models. You have you guys heard about NITS, network intrusion detection system? That is someone, if someone is from cybersecurity or someone is from networking, he or she would know. uh, so what you can do is you can make an anomaly based classification system that can actually detect whether or not uh, you know the particular packet, it is having a anomaly or it is a original packet. You can detect that. So an anomaly based classification model, you can work on that if you want. You've got a lot of um, resources from internet. You can get that. GitHub maybe, I guess there are projects. So you can work on that. Apart from that, you can work on simple projects like how data can be like refined more. If you're getting a like simple data, how you can get more information from them, and how you can get like you can, if you're knowing simple matplotlib, you should learn a little more about visualization of data from matplotlib. You can use different softwares also to do that. One if I know is I've worked on it. I've used in a couple of my projects. That is TensorFlow. TensorFlow, it is a framework. Though it is a framework, it is used like as a visualization tool also, because you have one extension of it called TensorFlow board. So tensor board. So you can use that to visualize your models, and sometimes you can use that to visualize your uh, data points also. So yeah, you can work on these projects. Yeah. Thank you, sir. Okay. I guess if anybody else is having any question, we can answer it, or else we can just wrap this off. Thank you, sir, for such an engaging and insightful session. Your journey and experience have truly inspired us, and we are grateful for the valuable knowledge you have shared. On the behalf of everyone present here, I extend my deepest gratitude for taking the time to join us today. We hope to stay connected and wish you even greater success in your future. Thank you, sir. Thank you very much.